हाय फॉक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम सीखेंगे कि आपका मेटा एड्स मैनेजर कैसे आप क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हो, उसे कैसे यूज कर सकते हो डेटा को रीड करने के लिए, कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, ऑडियंस को रीड कैसे कर सकते हो, कैंपेन को क्रिएट कैसे कर सकते हो। एवरीथिंग हम डिटेल में समझेंगे, ना ही समझेंगे बल्कि मैं आपको लाइव क्रिएट करके बताने वाला हूं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले आप क्लाउड लॉगिन कर लो एंड मेक श्योर करना है कि आपका जो क्लाउड हो, जब लॉगिन करेंगे आपका स्क्रीन कुछ ऐसे दिखेगा। एंड मेक श्योर करना कि जब भी आप स्क्रीन ओपन करोगे यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कनेक्टर्स दिखेगा। तो कनेक्टर्स में क्या होता है एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको आके आपका मेटा जो एमसीपी है मेटा का, वो कनेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड अगर वहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, यू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ओवर हियर एज अ कस्टम द कनेक्टर्स। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा नाम, लेट्स गिव इट टू मेटा एड्स। एंड जो यहाँ पे रिमोट एमसीपी सर्वर है, अब उसका नाम देते हैं, वो एग्जैक्टली होता है mcp/facebook.com/ads। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा, विच मीन्स दिस लिंक इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, मेक श्योर करना है कि आपका यूआरएल जो ऐसा हो। ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो अब यहाँ पे ऑथ क्लाइंट एंड सीक्रेट की होता है, जो ऑप्शनल है अभी फिलहाल के लिए, बट इसे हमें ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट क्लिक हियर ऑन ऐड एंड लेट्स ऐड इट। जैसे मैंने बताया कि इसे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो गया है, बट हमें इसे कनेक्ट करना बाकी है। सो अब द मोमेंट यू क्लिक ओवर हियर ऑन कनेक्ट, इट विल आस्क फॉर टू ऑथराइज। सो आपका ऐसे फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, आपको इसे ऑथराइज करना पड़ेगा। एंड आपका जितना भी अकाउंट यहाँ पे होगा वो सब एक्सेस यहाँ पे आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको इसे रिफ्रेश करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। कभी भी ये कनेक्टर परफॉर्म करे, उसमें आपके अप्रूवल लगे या फिर आपको ब्लॉक करना है या तो फिर आपको ऑलवेज अलाउ पे रखना है या फिर आप कस्टम पे रखना हो, तो लेट्स जस्ट गो अहेड फॉर द सेफर साइड, लेट्स कीप इट द नीड्स एन अप्रूवल नाउ। अब जैसे ही आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू चैट में आना है। न्यू चैट में जैसे ही आप आएंगे, लेट्स गो बैक एंड सेलेक्ट ओपस एज ऑफ नाउ। Let's give an instructions how my ads are performing in all ads manager. Let's just wait. So it will fetch all the required data, and of course, as I mentioned, it will ask for an approval. So आपको just वो approve करना पड़ेगा every time whenever it's required. सो नाउ इट्स आस्किंग कि कौन से अकाउंट का मुझे एक्सेस, कौन से अकाउंट्स का रिपोर्ट्स चाहिए। सो लेट्स गो अहेड विद ऑल एक्टिव accounts. So now we have got the data. Now it's summarizing everything for every account. So I have this account, and this have a largest, the data sets. And it's also giving me, like, what's working good and bad. So this is how you can fetch, like, and let's also fetch one of, like, how my ads are doing in. So again, so first वो पूरा जितने भी ads account active हैं, पहले उसका data, and then I'm just trying to fetch कि exactly पूरे account level पे क्या चल रहा है numbers wise. So just वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं if it's working well or not. पूरा मंथ का डेटा फ्रॉम 25 मई टू 23 जून तक का इसने फेच किया हुआ है। जितने भी कैंपेन उसमें एक्टिव हैं वो सबका डेटा यहाँ पे। सो आई मीन दिस इज गुड, the insight. So now what you can do is, instead of exporting the data from the meta and then the importing it to any the LLM models, it could be your Claude, Gemini, or the Chat GPT. बट अगर एमसीपी से आप कनेक्ट करते हो, दिस इज द वन ऑफ द काइंड द बेनिफिट विच यू विल गेट, कि डेटा डायरेक्टली वहाँ से फेच हो जाएगा। इट विल गिव इन जस्ट वन गो कि आपको क्या चाहिए। यू कैन रीड द डेटा एनालिसिस, कर सकते हो, डेटा के साथ प्ले कर सकते हो। एंड लेट्स गो अहेड विद, you know let me just ask if you can
increase the budget for by 5%. So now I have asked, okay, so there is no account. Okay, it might be in my another account. Okay, so let's create an campaign. So it's giving me everything, like if there's two account, one is closed and one is active. So now it's asking me the options कि exactly क्या करना है. So let's go ahead and create the lead generation campaign. Let's keep it daily budget. So now it has started creating the actual campaign. एंड ये बताएगा भी एग्जैक्टली कि क्या क्या कैंपेन है, किस उसका नाम क्या है, उसका आईडी क्या है. सो द कैंपेन इज नॉट लाइव, बट लेट्स सी if the campaign is actually created. Okay, let's match the names. Why? So it actually created the campaign. Let's review this campaign. Okay, so that it actually created the campaign, but somehow it missed to create an ad set. So let's just ask ad set and ads are missing in the campaign. So now it's asking me again, like क्या होना चाहिए exactly. Mumbai plus nearby area. Let's also go ahead with the age. Form भी create कर सकते हो. Now it's creating the instant form. This is interesting. So page को access नहीं है, but yes, you got the point, correct? Okay, now let's review कि exactly इसमें क्या हुआ है. Still the campaign is false. That's perfectly fine. Okay, so there is no ad. Okay, there is still no ad set. सो नाउ आई एम गिविंग एन इंस्ट्रक्शंस कि ये दूसरे पेज पे शिफ्ट कर पाएगा क्या सेम चीज़ को. Now it will create an the whole ads from scratch in a different account. Now this is the kind of play, like you can do, like अगर एक चीज में नहीं चल रहा है तो दूसरे में. I'm just exploring these things, like how this whole things work. Let's create ads as well. So like it's giving an options, like क्या क्या चीज exactly ads create करने के लिए होना चाहिए. I just opted की placeholder को select करके वो create कर ले, and then I'll change it in the ads manager. या फिर कोई क्रिएटिव है जिसका यूआरएल जो मेटा पे होस्टेड है, ऑफ कोर्स अगर उसका यूआरएल है तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, वो डेफिनेटली वैसे क्रिएट कर देगा. नाउ कैंपेन क्रिएट हो गया है, एडसेट क्रिएट हो गया है, एड क्रिएट हो गया है, क्रिएटिव भी हो गया है. सो लेट्स रिव्यू इट इफ इट्स एक्चुअली क्रिएटेड इन द अकाउंट. सो यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया है, कैंपेन ऑफ है, परफेक्टली फाइन. लेट्स गो एंड चेक. ओके, सो एड्स क्रिएटेड है, बजट ओके. सो सीवीओ पे कैंपेन है, डेली बजट 800 रुपये है, और परफेक्टली फाइन. ओके, पिक्सल्स सिंस दिस वाज ऑलरेडी क्रिएटेड, सो दैट्स परफेक्टली फाइन. एडवांटेज प्लस ऑन रखा हुआ है. सी यहाँ पे इसने मिस्टेक्स कर दिया है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, जो कि मैंने क्लियरली वहाँ पे मुंबई है ये है. सो इसने ऑडियंस को सेलेक्ट नहीं किया, आई मीन लोकेशंस को प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं किया है. Of course, we'll come on that too, and we'll ask if that is something can be fixed. Let's review the ads now. So let's just ask. The location is Mumbai, correct? But in ad set, it's showing US. Right. लेट्स सी इफ इसे ये फिक्स कर पाएगा. तो शायद ये यहाँ पे देयर इज नो डेडिकेटेड लोकेशन सर्च टूल अवेलेबल हियर. ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द कंट्री लेवल देन. सो जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये सिर्फ कंट्री लेवल पे ही फोकस कर पा रहा है, बट सिटी लेवल पे ये नहीं कर पा रहा है. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा एंड चेक करना पड़ेगा. सी एज आई मेंशन कि AI of course can make your work things faster, but आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा इफ इट्स एक्चुअली वर्किंग फाइन. ओके, सो यहाँ पे ये इंडिया अपडेट हो गया है, बट यस जो कि कैंपेन मुंबई के लिए है, बट ये नहीं हो पा रहा है. बट या बट इट्स मेकिंग
लाइक 70% आपका वर्क है वो यहाँ से हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स देयर इज मल्टीपल थिंग्स जो आपको यहाँ पे मॉनिटर करके फिक्स करना पड़ेगा. दिस इज नॉट जस्ट गोइंग अहेड एंड गिविंग एन इंस्ट्रक्शंस कि ये हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए, बट समहाउ यू जस्ट हैव टू कीप एन आई कि जो चीज़ें वो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं. दैट्स ऑल. But yeah, this is how you can the connect your the Meta Ads Manager with the Claude using the MCPs, Meta's MCPs, and you can actually the view the reports, create the campaign using just directly from your Claude chat. So that's how you have to do it. See you in the next video. Bye bye.